Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 7th class, Assalamu alaikum. I am Muhammad Amir, your English teacher. Today again we are going to read lesson number 11, Animal Architects, जानवरों की तामीरात. In our previous lecture we studied first 15 lines, but in this particular lecture we are going to finish this lesson by reading line number 15 to 28. So take out your books and open page 53. Remember, first of all I would read out line number 15 to 28 in order to make you pronounce the words accurately, and then after that we would start translating it into simple Urdu. Put your fingers on line number 15. The curious thing about it is not so much that the tailor bird stitches the leaves together, as that nobody seems to know where he finds the cotton material with which to do the sewing. Some experts insist that he weaves it himself, others that he has some source of supply that has never been discovered. As I say, the stitches were rather large and inartistic, but then how many people could make a success of sewing up 2 leaves using only a beak as a needle? Architecture in the animal world differs a great deal. Some animals, of course, have only the haziest idea of constructing a suitable dwelling, while others produce most complicated and delightful homes. It is strange that even among closely related animals there should be such a wide variety of taste in the style, situation and size of the home and the choice of materials used in its construction. In this way, we have read out the second half lesson of unit 11. Now we are going to translate it into simple Urdu sentence by sentence. The curious thing about it is not so much that the tailor bird stitches the leaves together, as that nobody seems to know where he finds the cotton material with which to do the sewing. इस सेंटेंस में राइटर हमें बताना चाहता है कि टेलर बर्ड के मुतालिक पुरतजस्सुस चीज़, तजस्सुस वाली चीज़ ये नहीं है कि वो 2 पत्तों को आपस में जोड़कर सिलाई कर देता है, बल्कि ये है कि कोई नहीं जानता कि कपास के जिस रेशे से सिलाई करता है वो ये कहाँ से लाता है, कहाँ से हासिल करता है. वाइल्ड लाइफ के लोगों ने टेलर बर्ड को स्टिचिंग करते हुए देखा है, लेकिन वो धागा कहाँ से लाता है इसके बारे में अब तक डिस्कवर नहीं किया जा सका. सेकेंड सेंटेंस, सम एक्सपर्ट्स इंसिस्ट दैट ही वीव्स इट हिमसेल्फ. कुछ माहिरीन का यह ख्याल है कि ये धागे को खुद बुनता है. अदर्स दैट ही हैज़ सम सोर्स ऑफ सप्लाई दैट हैज़ नेवर बीन डिस्कवर्ड. लेकिन कुछ माहिरीन का यह ख्याल है, दूसरे माहिरीन का यह ख्याल है कि उसके पास धागा मुहैया करने के कुछ ज़राए मौजूद हैं जिनको अब तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका. As I say, the stitches were rather large and inartistic. जैसा कि मैं कहता हूँ कि टांके जो थे वो भदे और गैर माहिराना थे. But then how many people could make a success of sewing the up 2 leaves using only a beak as needle? इस सेंटेंस में राइटर हमें कहना चाहता है कि जैसा कि मैं कहता हूँ कि टांके बड़े और गैर माहिराना थे, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो चोंच को सिलाई के तौर पर इस्तेमाल करके, चोंच को सुई के तौर पर इस्तेमाल करके पत्तों की सिलाई करने में कामयाब हो सके. मतलब वो यहाँ टेलर बर्ड की फेवर में आ जाता है, उसके डिफेंस में आ जाता है कि लोग अक्सर कहते रहते हैं जो टांके लगाता है वो इनआर्टिस्टिक होते हैं, अमेचर होते हैं. लेकिन वो कहता है कि अगर इंसान अपनी चोंच को सुई के तौर पर इस्तेमाल करे, क्या वो इतने माहिराना टांके लगा सकता है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है. Now we are going to translate last paragraph of this particular lesson. Architecture in the animal world differs a great deal. जानवरों की दुनिया में फ़न तामीर का बहुत फ़र्क है. मतलब मुख्तलिफ़ जो जानवर हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर घर बनाते हैं. कुछ दरियाओं समुद्रों के करीब बनाते हैं, कुछ पहाड़ों पर बनाते हैं, कुछ ट्रीज़ पर बनाते हैं, और एवं कुछ जो हैं ज़मीन में बरोज़ बनाकर रहते हैं. Some animals of course have only the haziest idea of constructing a suitable dwelling. कुछ जानवरों में बेशक रहायश की तामीर का तस्वुर नहायत धुंधला होता है.
मतलब कोई सा भी वो घर बनाकर सिंपल रह लेते हैं। While others produce most complicated and delightful homes, जबकि दूसरे जानवर जो हैं वो नहायत पेचीदा और बहुत खूबसूरत और आरामदेह घर बनाते हैं। It is strange that even among closely related animals, there should be such a wide variety of taste in the style, situation, and the size of the home and the choice of materials used in its construction. ये बहुत अजीब बात है कि एक दूसरे से इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखने वाले जानवरों में भी पसंद, अंदाज, जगह, घर की जसामत, हत्ता के तामीर में इस्तेमाल होने वाले जो सामान है उसमें भी बहुत ज़्यादा तनूव पाया जाता है। It is the end of my lecture. I hope you would have enjoyed it. If you have got any problem regarding this particular lecture, sorry for that. I forgot to make you write difficult meanings of difficult words found in line number 15 to 28. Curious, tajassus वाली, swing, सिलाई करना, experts, माहिरीन, insist, इसरार करना, weaves, बुनना, source, ज़रिया, discovered, दरियाफ्त करना, in artistic, गैर माहिराना, differs, इख्तलाफ होना, haziest, धुंधला, constructing, तामीर करना, suitable, मौजू, dwelling, रिहाइश, घर, complicated, पेचीदा, delightful, आरामदेह, strange, अजीब, taste, पसंद, situation, जगह, materials, सामान, हवा। Okay students, take care. Thank you very much. Bye bye.